ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு. Good morning and hello to everyone who is joining with us for the second match of the day of this Rockfort Cities Premier League T20. The match is between WALAJABAD Cricket Club versus SS Brothers. WALAJABAD Cricket Club will be batting first versus the SS Brothers. They have just lost a match versus this is going to be very, very important contest because they have lost a match just now by 20 runs. And then this is going to be a very important run versus SS Brothers will ensure that they are coming up with some very, very good ones here. And both the batters now they're at the contest. Aji and Lakshmin are the two opening batters for WALAJABAD Cricket Club, as Ready, sir? Saran Raj A has the ball in his hand. The man in blue versus the man in pink. So it's Ready, going to sir? be kind of a rather hot and humid day, I would say, because the sun is shining it all is mighty on this Saturday morning. The ball Right running ball. in again. All to Azi. First ball wanting to hit it over the cover, but the umpire says it's an extension of my arms to signal the ball rolling for you, but not with the bat, but as an extra. Saran Raj A, the bowler, is saying that you might be a little harsh on me. Ball is swinging a little bit away. I think the umpire is right because that ball was swinging and it kept on swinging way outside that off stump into the safe gloves of the wicket keeper. So WALAJABAD Cricket Club off the mark with the first single as in the form of an extra, slashed it very well, making himself some room. There is a fielder, bit of an uneven bounce towards the man at a deep point. Will get a couple of runs off the bat, and so the run of WALAJABAD Cricket Club will be now 3 for no loss with those couple of runs off the bat. Electing to bat first today versus SS Brothers. They really need this win, having lost by 20 runs in the previous encounter today of the very first match of the day. They need this win, otherwise they might just be on the back foot in this Rockfort Cities Premier League T20. Saran Raj A again running and steaming in. It's on the back foot. Umpire nods, and guess what? The slow dreaded finger comes up from his left hand. The Archie is little surprised. He's asking his partner Lakshmin and will immediately show the signal that he wants to go upstairs to have a check whether he survives or he has to go back to the pavilion. Up comes the walkie-talkie and a signal for the TV umpire. There we go. And pitching on. I think he's a goner. I think he is in some sort of serious trouble here, Aji, because not only he was on the back foot, but he was playing right there on the middle stump. There you can see the shuffle of the back foot, and
and the pitching of that ball is will be very very important. Yes, zoom that for us, Mr. Technical Man. Zoom that up for me. It'll be very easy to make that equation very easy for the eyes. And there you can see he's already on the back foot while playing to aim for that shot, and the ball pitches on middle right on the back foot. He is a complete goner. I believe that must be Palam in front, just to ensure and to make things clear in his mind. He has gone upstairs. Otherwise, I feel he is a complete goner here. The bat also is not in a position to play that stroke. He was not in line of playing that stroke. There you can see. Look at that head position. Look at that bat. All are not in perpendicular to where that ball has seamed up. And I think it's trouble bringing up here for Aji. Just in number one, but he may not be the number one batsman featuring in the ranks today for WALAJABAD Cricket Club, because he might just be a goner. Just be gonna, there you can see that ball right in perpendicular with that line of the stump, so that might also suggest that he might be he might be in troubled waters rather than in safe shores, and a decision might just work out against him and in favor of SS Brothers. But whatever it is, the replays are being, as of now, being shown and being reviewed by the TV umpire, and I feel that the dreaded finger will still be luring around for Achi. Umpire will go back to his position to signal what has come, and yes, the dreaded finger remains intact. So the first breakthrough here for SS Brothers, and it's Saran Raje who has given the breakthrough. It's OUT on the screen. WALAJABAD Cricket Club are 3 for 1 after 2 balls. Having lost by 20 runs versus Champions 11 in the first match. Now WALAJABAD again are finding themselves a little bit on the back foot on the very second ball after losing the wicket of Azi now. But no complaints for Saran Raj from SS Brothers as he has made the phrase true. Again, running into ball to Uday UK. A good ball, pitching on the money, but the umpire says let it be peace because that ball must have just swung towards the leg stump. It kept swinging, There you can see the non-striker Lakshmin say, "Why don't you play with the swing of the ball? Why are you covering your stump so much? You've already seen your partner going. This is so much of a dangerous proposition here." That's the swing. That's the swing. Missing it completely. Uh, Again, there was a run-out opportunity also, but Lakshin was asked to go back to safe waters. He was a little upset with the kind of running communication that has been conveyed from Uday UK. Ranaraj running in again. This time a full toss delivery, wanted to swing the bat, but we will just get a take inside edge to get off the mark. Is the UK, and we'll give the single to Lakshmin, who is yet to face a ball, and the score will now move on to 5 for 1. In fact, it's a couple of runs for the UK in the second ball. So Lakshin will still stay at the non-striker's end. He has seen so much of drama in the very first over. An appeal, third umpire going upstairs, and then out. Then again, an opportunity for a run out. So much of drama happening. Oh, good ball. That has come out of absolutely nowhere. That ball pitched and deviated a bit. Got befooled with himself. I think he has himself to be blamed with the UK not playing to the pitch of the delivery, remaining little back, and all the two stumps are exposed. You don't have to make yourself seem like a tail ender, really, because it's just the first over. Not even the first over has finished, and you're playing so much away from your body. It makes things so much easier for a fast bowler running up to you while you're doing so. Last ball of the first over from Sharan Raj, stepping into ball to Uday UK. Uday UK swings. It's a swing Over. and a miss. You hit, you miss, I hit. Works every time.
The second wicket is down for WALAJABAD Cricket Club with just 5 runs on the board, and it's Saranjaj A who will smile again because he will capture the second wicket of the day. And for him also, here you can see it will not be a happy picture, not be a happy picture. Really don't understand the ploy. Why do you have to swing in the very first over? It was never required from you. But whatever is the story, he has to go back to the pavilion after scoring just 2 runs, and it's 5 for 2 for WALAJABAD Cricket Club in a very first over versus SB Brothers. सो 5 रन पे 2 विकेट खो चुके हैं वालाजाबाद क्रिकेट क्लब। इनका दूसरा मैच दिन का, पहला मैच वो 20 रन से हार चुके हैं वर्सेस चैंपियंस 11। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए। लेकिन दोनों ही बैट्समैन, एक जो अभी अभी गए हैं, उन्होंने तो बिल्कुल उड़ाई के, तो बिल्कुल ही वो शॉट नहीं बनता था, लेकिन स्विंग करने गए थे और अपने विकेट गंवा गए थे। इस बार बैकफुट पे जाकर पुल किया है और ये 4 रन जरूर मिलेंगे उनके और अपने खाते में ये रन की बढ़ोतरी होते हुए, और 9 रन अभी 2 विकेट के नुकसान पे। वाजिलाबाद क्रिकेट क्लब देखिए कितनी शॉट थी, बहुत टाइम मिल गया था उनको और ऑफ स्टंप के बाहर से इसको स्मैश कर दिया है मिड विकेट के रीजन पे। 4 रन उनके खाते में, 9 रन और 2 विकेट के नुकसान पे एसबी ब्रदर्स के खिलाफ। और हाथ गेंद में उनके हो गए 9 रन, लेकिन 2 विकेट भी चले गए। ये देखिए स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखेगा बाएं तरफ ये साइड, ये फ्रंट एंगल, और जो आपके राइट स्क्रीन में है वो साइड ऑन एंगल है। देखिए बहुत ही खराब शॉट, लाइन को बिल्कुल भाप नहीं पाए, बिल्कुल लाइन को मिस करे थे। पहली बात ये जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही पहला ओवर है ये। एक आप अपने कलीग को देखें वो कैसे बॉल को स्विंग के साथ वो आउट हो चुके थे, और अब फिर आपने एक खराब शॉट मार के अपने आप को चलता दिया। इट्स नॉट लाइक प्लेइंग फॉर अ टीम स्पोर्ट, यहाँ पे मैं कहूंगा। बलू फिर से दौड़ के आ रहे, लक्ष्मण को आउटसाइड ऑफ स्टंप फिर से मारने की कोशिश की थी। ये जो उनकी रणनीति है बार बार मारने की कोशिश, ये उनको कभी कभी डुबा भी सकता है। आउटसाइड ऑफ स्टंप और ये वाइड का इशारा काफी ज्यादा बाहर था ये, और 1 रन का इजाफा यहाँ पे आपके रन में, तो डबल फिगर्स पे पहुंच गए हैं वालाजाबाद क्रिकेट क्लब। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भालू फिर से दौड़ के आएंगे, लक्ष्मण को शॉर्ट डिलीवरी था, हिंट ऑफ मूवमेंट अवे, लेकिन फुटवर्क देखिए बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हल्के से आपने कलाइयों को और बैट को डिफ्लेक्शन के साथ दिखाने की कोशिश की थी, ये तो बिल्कुल ही गलत रणनीति में कहूंगा। अभी अभी आप एक मैच हार के आए हो चैंपियंस 11 के साथ, और वो उससे जरूर सीखने की जरूरत है उनको, ना कि आप ऐसे स्ट्रोक्स खेले जो आपकी डाउनफॉल बनेगा। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे वालाजाबाद क्रिकेट क्लब। बालू फिर से दौड़ के आए लक्ष्मण के खिलाफ, आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको स्लैश के मारने की कोशिश, ये हवा में है गेंद बहुत ऊपर, फील्डर उसको नीचे और ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है उनको। एक जीवन दान मिल गया है लक्ष्मण को। बहुत ही खराब शॉट और बहुत ही खराब प्रदर्शन वहां पे फील्डर के साथ, और बालू ने बोला होगा कि मुझे पकड़ने दो, उसने बोला नहीं ये मेरा कैच है, लेकिन फिर से ये बॉल नीचे चली गई। देखिए कितनी ऊपर लग गई थी बैट के। ये आप स्प्लिट स्क्रीन में देख सकते हैं बाएं हाथ के स्क्रीन में कैसे वो दौड़ के आ रहे थे, लेकिन ये दो ओ नहीं जी नहीं, अब तो काबू में नहीं लेके पाए उसको, बॉडी को बिल्कुल हाथ के साथ लेने की कोशिश कर रही है, ये स्मैश कर दिया है उनके सर के ऊपर से और सीधी बाउंड्री के जाएगा। 4 रन, कितना ही ड्रामेटिक ओवर है ये।
पहले ऊपर स्विंग मिस और ये इस बार करारा प्रहार कर दिया है, 4 रन उनके नाम पे ओपी मिलेगा कहीं और वही ये थे तो जरूर चश्मा उनको खटखटाएगी कि इससे पहले मुझे ही जाना चाहिए था वो विकेट के प्रयास में। लेकिन उसके नेक्स्ट गेंद में बिल्कुल बिल्कुल शॉट उनके सर के ऊपर से मार दिया था और 4 रन मिलते हुए उनको। और वालाजाबाद क्रिकेट क्लब, वो उनका रन में गतिविधि होती हुए 14 रन का इजाफा 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद सेकंड ओवर बालू का, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ने फिर से मार दिया मिस टाइम शॉट, लेकिन ये गेंद जाएगी बिल्कुल पीछे। 2 स्लिप्स मौजूद है लेकिन दोनों को जाएंगे थर्ड मैन वाले जो फील्डर है उनके साथ जाके बॉल वॉचिंग के लिए। लेकिन ये 6 हो ओए गया, रोड 4 भी नहीं 6 रन சார் मिलेंगे। क्या இதை ओवर है பக்கம் போது சொல்லுங்க அவரை ये! 2 ओवर बिल्कुल ड्रामा से இல்ல இல்ல இந்தாண்ட भरपूर था। 2 ओवर के बाद वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 20 for 2 is Walajabad Cricket Club, still in a very, very precarious position. But the last over was very, very dramatic from Baluan. A wicket, and இந்த then விக்கெட்டை விட்டு வெளியில ஓடுங்க he வேணா also போய் அங்க got பண்ண smashed சொல்லுங்க for a boundary பரவாயில்ல down the சேஞ்ச் ground. பண்ணிக்கிங்க And the man in question was Lakshmin. And then in the very last ball, what he did was very, very unthinkable. Wanted to slash it down the ground, wanted to repeat the stroke, but a healthy, thick outside edge made that ball go soaring towards towards the third man boundary for 6 runs. And this is not short of a boundary. This is again been hiked it சார் over சிக்ஸா with சார் one leg up across towards the long offense for wonderful 4 runs. I was about to say 6, but it's 6 minus 2, 4 runs. But they are going and floundering at a very good run rate as of now. But it's very important that they also keep the runs intake, because that rush of blood sometimes might be your downfall. But at the moment, they're enjoying the cricket and they really need to put up the equation to a very, very nice decibel, because they are on the back there, because the back is against the wall. Having lost a match, the first match versus the Champions 11 by 20 runs. At one point, they were shaping up at the doorsteps of victory, but when the runs dried up and the wickets started tumbling, they never looked in the equation, in the hunt, in the target of 171. Sanan Raj again moving on to this is flicked very well in the air towards that car பவுண்டரி corner. There is no one present, and the 4 runs will be awarded to Lakshmin. He moves on to 22 of 8 and the score on to 29 for 2. This is a lovely batting display here, especially from Lakshmin. This is movable. This is lovely movable. He is taking both the batsmen to the cleaners. Probably some kind of information be pitched onto him, saying that you really need to use the long handle. You cannot just peg yourself down here. Moves on to 22 of just 8 deliveries on that score of 29. Gives himself some room again, wanting to play it more finer, but it will go towards the square leg boundary. But there is a fielder who will cut it off, and will get a couple of runs though, and will move himself டூர் on to 24 of 29, and the score on to 31 for 2 for WALAJABAD Cricket Club. Look at that projected score, 233. It's massive. That would be massive. But it's a long story to go. It's not even the power play finished. But Saran Raje, he has 2 wickets to his name, has conceded 16 runs of 10 balls. That must be
which must be lurking on his mind, that he has so many runs that he has actually considered running in again to ball to Lakshman. Lakshman shapes up to play a big shot over No, और बोल long on, but he will बोल get बोल a kick inside edge towards that fielder stunning at who has been asked to stand up more to the squarish and shorter at fine leg. And so just no run. It's a dot delivery. LKB Saravanan, as I was mentioning, he seems like a Lakshman Shivarama Krishnan of the former Indian leg spinner who played for the Indian cricket team. But he didn't contribute much to the bat, neither with the ball today. So he really, really needs to show something because the fate from the management has been reposted onto him to clean up some runs. White ball. Last ball of the third over from Saran Raje, which has been bowled down the leg side. Wicket keeper fumble. It is going beyond him and behind him. Will it go towards the boundary? There are two fielders and one of them would retrieve it, but it will be a couple of runs plus an extra to make that score move on to 34 for 2, with one more legitimate delivery remaining in the third over from Saran Raj A. Last ball of the third over from Saran Raj, falling to Lakshman, gives himself room, Over. wanting to glide that ball with that away movement. Was just trying to poke the ball. He was trying to do some dill scoop also. That's what he's trying to show in the end. But no run. 3 overs have been done and dusted. WALAJABAD Cricket Club are 34 for 2. और कल के 3 मैचेस यहाँ देख सकते हैं. कल 15 सितंबर, ग्रैंडियोज सीसी वर्सेस क्रेजी क्रूज, लॉर्ड्स 11 संडोज सीए वर्सेस क्रेजी क्रूज, फिर ग्रैंडियोज क्रिकेट क्लब वर्सेस लॉर्ड्स 11 संडोज सीए. सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएगी 7:25 की, और ये उठा के फिर से मारा है. कहाँ गेंद पहुंचेगी? कैच हो सकता था आखिरी मोमेंट पे, उनकी हाथ को छूमती हुई कवर्स के ऊपर से ये 6 रन. ये कुछ अलग ही सर हो सिक्सर बोला. सकता था, ये तीसरा विकेट हो सकता था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल एंड मौके पे जाके गेंद उसके हाथ में लग के और कवर्स के ऊपर से. सो हाफ अ डजन रन्स मिल जाएंगे यहाँ पे होल्ड बालाजाबाद பண்ணுவான் क्रिकेट செக் क्लब के लिए. பண்றாங்க. बिल्कुल अभी हाथ खोल के खेल रहे हैं, ஃபீல்டர்ஸ் கால் अपने आप தானப்பா, ஃபீல்டர்ஸ் कॉन्फिडेंस इतना கொடுத்துட்டாரு हासिल 6ன்னு. कर रहे हैं क्योंकि ஃபீல்டர்ஸ் उनको கொடுத்துட்டாங்க. என்ன டெக்னாலஜி ये இருக்கு. रन्स ऑन द बोर्ड लाना बहुत जरूरी है. அவங்க செக் பண்றாங்க. और क्योंकि वो लोग 20 रन से हार चुके थे पहला मैच चैंपियंस 11 के विरुद्ध, तो ये मैच बहुत जरूरी है. ये देखिए ऑफिशियल सिग्नल आ गया है अंपायर से, दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलने के लिए कि ये 6 रन था. और पार्टनरशिप देखिए 35 रन सिर्फ 13 गेंदों में सरवनन और लक्ष्मण के बीच. उसमें से लक्ष्मण ने ज्यादातर स्कोरिंग की है. अभी एक 6 आया है शरवनन के बैट से, 7 रन पे है ये. फिर से शॉर्ट डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप और फिर से वाइड हो जाएगी. ये हेल्प नहीं कर रही. ये इसको कहते हैं प्रेशर, इसको कहते हैं प्रेशर. आप जितना हो सके उस प्रेशर को अपने आप पे रखोगे, उनको उसको सोक करोगे, उतना ही आप पे हेल्प होगा. उन्होंने 6 मारा कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप करोगे तो अंपायर को तो अपनी ड्यूटीज निभानी ही पड़ेंगी, हाथ दोनों फैला के. तो आते हुए एक गेंद में सिर्फ एक गेंद में 7 रन आए क्योंकि ये वाइड था. फिर से दौड़ के आएंगे बालू. शरवनन को बैक फुट पे थोड़ा सा जगह हल्के हाथों से अपने 28 से फ्लिक करके स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा. वालाजाबाद क्रिकेट क्लब पहुंच जाएंगे 42 2 विकेट के नुकसान पे. ये स्प्लिट स्क्रीन देखिए, ये राइट वाला जो स्क्रीन है ना, ये ज्यादा आपको हेल्प करेंगे. जब वो
खोल के मारने की कोशिश करते हैं ना, जस्ट जस्ट टॉप एज लगा, जस्ट देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर वो देख रहे हैं, लेकिन उस शॉट में जो गतिविधि थी उसी से ये बॉल जा रही थी। ये बॉल इसलिए उनके जब हाथ में लगा ना, उनको बड़ा थोड़ा सा उनको वो फीलिंग आई थी कि ये तो बड़ा ही प्रहार शॉट था। फिर से खोल के मारने की कोशिश डाउन द ग्राउंड, लेकिन कुछ कनेक्शन कर नहीं पाए। बॉल जाके पीछे जाएगी विकेट कीपर के सेफ दस्तानों में। और थोड़ा सा उसमें उसमें रेस्ट। ये देखिए फिर से शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो शॉट वो कैसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें बालू एन को थोड़ा सा संभाल के बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इधर उधर वो लाइन से भटक गए तो फिर वो स्मैश कर सकते हैं आपको, क्योंकि 24 पे के हाँ गिर जाएंगे। देखिए संभाल के जरा बैट्समैन साहब, स्टंप्स पे गिर गए ना तो हिट विकेट का भी लॉ है गेम पे, हिट विकेट का भी लॉ है गेम पे। हाँ अभी दिस इज सो गुड टू सी, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए। जाके चेक करे बैट्समैन को, आप ठीक Are you हो ना, feeling okay? लेकिन मन में सोचेंगे कि But प्योर बाउंसर देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा देख के कि जाके बैट्समैन को आप चेक कर रहे हो कि वो ठीक है कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ फेयर प्ले, स्पिरिट ऑफ द गेम अवार्ड में आप लोगों ने एक पॉइंट जरूर जीत लिया है, एसबी ब्रदर्स। सो और ये देखिए भालू है बाउंसर मारते हुए वो शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए, और थैंकफुली वो गिर भी नहीं गए। भालूवेन फिर से दौड़ के आ रहे हैं लक्ष्मण की तरफ, डाउन विकेट फिर से चले गए हैं। टाइमिंग इतनी बेहतरीन नहीं थी, फील्डर के ऊपर से थोड़ा सा हाँ लग जाती हाथ में तो शायद लपक सकते थे ये कैच, लेकिन थोड़ी सी शायद उंगली में लग के ये गेंद पीछे चला गया है। लेकिन एफर्ट जरूर था, एफर्ट के लिए 100%। उन्होंने जंप का जो टाइमिंग था वो भी अच्छा था, लेकिन ये देखिए स्लैश मारे हुए टाइमिंग बेहतरीन नहीं थी। थोड़ा सा और 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड अगर अगर थोड़ा सा पीछे या ऊपर और करते तो शायद ये कैच उनके हाथ में थम जाती। कपल ऑफ रन्स आ गए हैं इस बॉल से। लास्ट ओवर 4 गेंदों के फिर से बैकफुट पे जाके उसको खेल दिया है ओवर मिड विकेट और काव कॉर्नर की दिशा में 6 रन के लिए। अपनी निजी स्कोर 32 पे पहुंच जाएंगे 15 गेंद के बाद, और 4 ओवर के बाद 50 रन का भी आंकड़ा ऊपर आ चुका है। वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 52 विकेट के नुकसान पे। So Lakshmin has been exhibiting some perfect stroke play as he moves on to 32 of just 15 balls, and a 50 is up for Walajabad Cricket Club. And Saran Raj A will continue his bowling spell, his third over of his spell. A good ball, very good ball, asking to batsmen to invite a little bit off the back foot, punching it towards cover, no run. But Lakshmin at the other end, he is making the bowlers think very much, as he has been making himself some room, and the balls which have been very short onto him, he has climbed onto it. And one of the reason is the last ball has been hit for a thunderous shot of the bat towards mid wicket region, for a handsome 6 runs, which was over almost at long on fence. And just such shots, I'm sure someone there is sending it. That sound of the mat must have been so sweet to hear. And now again, the dreaded figure of Lakshmin onto 32 of 15 will be facing Saran Raj A. Look at that stance. Look at that open stance. He already is signaling that I am here to hit the ball again, making a room himself back and across kind of a movement. This time doesn't connect, as the ball will go towards the safe gloves of the wicket keeper. This ploy was good from Saran Raj to ball little short, just to make him think, because he was doing back and across to upset the line of the bowler. But it was good thinking from Saran Raj to give him a bouncer and to upset his rhythm. Again, steaming into ball to Lakshmin. This time very watchful. The timbers are disturbed.
And Saran Raj gets his third wicket. He gets the important fish of Lakshmin. He has to go back to the pavilion after scoring 32 of 17. And the third wicket is down for WALAJABAD Cricket Club at 51 for 3. This replay will be very, very good to see. This is a side that Saran Raj would love to see. This time it was more fuller. He gave himself so much of room to play, and he misses that connection despite showing some shadow figures. And the law says that if you're bold, you have to go back to the pavilion. And I'm sure Saravanan says that you got the rush of blood. There is a small, very tiny, those three, as Rahul are also joins in the thinking equation, and that man with the water also comes up, and he says that some kind of a discussion definitely happening there. But the third wicket is down for WALAJABAD Cricket Club. It's 51 for 3 on the board, and Saran Raj A has his third wicket. It's 3 for 20 for him. Two more. Two more. Boundary. And immediately we see a boundary here. Rahul R will get off the mark with that boundary. Probably not the healthiest of the boundaries that you would love to see of the bat coming up, but nonetheless it's 4 runs added to the total for WALAJABAD Cricket Club, and they are on to now 55 for 3 in 4.5 overs. Saranja is still, he has a very nice bowling figures of 3 for 24 with one more ball remaining in the third over. The current run rate, it's very huge. Look at that run rate, 11.38. It's huge, but thanks to the fact also that Ashwin has played a cameo, as the last ball has been defended very well towards the man at point. It's a dot ball. 5 overs done and dusted. WALAJABAD Cricket Club are 55 for 3. Over. Sir, bowler coming. Batter. Sir coming, right arm over.
55 3 विकेट के नुकसान के बाद एसएस ब्रदर्स के विरुद्ध वालाजाबाद क्रिकेट क्लब अश्विन चले गए वापस। और वो जो दृश्य है ना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर दर्शाएगा। 21 नंबर की जर्सी मणिकंदन जी बॉल के साथ फ्लिक कर दिया फाइनली की दिशा में। बॉल दनदनाता हुए बाउंड्री की तरफ चली जाएगी। ये शनिवार का दिन है, सूर्य जी प्रकट हो चुके हैं और ये बॉल भी हंसी हंसी मजाक मजाक में वो चली गई है। बहुत ही सुंदर सा स्ट्रोक था, ये फ्लिक कर दिया था सरवनन ने, जो अपने निजी स्कोर 13 रन पे चले जाएंगे 8 बॉल के बाद। और स्कोर अभी आ जाएगा 59 for 3 in 5.3 overs। चौथा गेंद चैती बॉल का मणिकंदन जी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ दिया है। कोई छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने शॉट्स थोड़े से अच्छे भी लगाए, तो मौका जब मिलेगा ना तब जाके हम हाथ खोलेंगे। तो कोई स्लिप नहीं है, कोई दीप गली नहीं है। ये बिल्कुल थोड़ा सा फैल चुका है। अब अभी भी पावर प्ले के अंदर ही है, 6 ओवर भी अभी भी खत्म हुआ नहीं है। एक बाउंड्री जरूर है इस ओवर में। डिफेंस में जाके पूरा फ्रंट फुट पे आके इसको डिफेंस किया है, लेकिन थोड़ा खड़े खड़े डिफेंस किया। इट्स नॉट कि पूरा जाके वहां पे डिफेंड किया, इसलिए ये लगता है कि थोड़ा सा शायद हाफ हार्टेड स्ट्रोक होगा। ड्राइव के लिए शायद जाना चाहते थे। पहला जो उनका इंट्यूशन था वो ड्राइव के लिए था, अगर आप रिप्ले देखेंगे तो, लेकिन लास्ट मूव में उसको डिफेंड किया। आखिरी गेंद 6 ओवर का मणिकंदन जी का होगा पहला, उनको जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के सेफ दस्तानों में। और 6 ओवर के बाद 6 एक्स्ट्रा के साथ वालाजाबाद क्रिकेट क्लब का स्कोर है 59 3 विकेट के नुकसान के बाद एसएस ब्रदर्स के खिलाफ। और आप ये देख रहे हैं रॉकफोर्ट सिटीज प्रीमियर लीग T20। ये मैचेस यूट्यूब में आ रहे हैं लाइव प्रोफेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स और अल्टीमेट क्रिकेट सीरीज का। आपका आंखों देखा हाल, मैं आपका होस्ट कमेंटेटर मयूर बरुआ ये सारा यहाँ पे आपसे आपको भेज रहा हूँ। आपको आई होप आपको पसंद आया होगा कि कितना सारा इक्वेशन है, और एंजॉय कीजिए टीजर रूरल इंडिया T20 का। Bowler coming right arm over. WALAJABAD Cricket Club are 59 for 3 in 6.1 overs. As Venkat has the ball in his hand. And slow, gentle, medium pacer. The wicketkeeper is up to the batsman also. Fuller delivery this time, drived very, very much well on the front foot. Little bit bad gap between bat and bat. You can see that kind of a daylight coming in between there. These are the league matches which are being played of the Rockfort Cities Premier League T20. Both these batsmen now would love to stitch a small little partnership. Mind you, this is a club having lost the first match of the day versus Champions 11. This is a little bit of a yes and no situation, wanting to pick up that single as the ball was bowled very well, almost at a Yorker length to Rahul R, who has come at the fall of the wicket in the last over.
And now his first thing first, settle yourself, try and get some runs, give the strike to Saravanan. Oh, good ball, good ball. There is an appeal, half an appeal. At one moment I felt it was bowled him, but then when I saw the appeal, oh, he was going for the LBW. But very good ball. That ball checked in from a very good length, was almost on a half of pitch of a length while he was trying to front on probing on the front foot. You can see the split screen coming up. I think the right hand screen will be very, very interesting to see. It was going over the top. It was going over the No, top. no, So no, very, not very out. good decision from the umpire, as there's five consecutive deliveries has now come up. It's good. This is a very good start from Venkat, and you'd believe that this line can be consistent enough, as the wicketkeeper is also up to the stance, and Rahul R will be applied some pressure. He already has 4 runs to his name, so he doesn't have to bother too much. Last ball of the seventh over, defended again. The ball a little bit on the curve of the Over. bat has been deposited towards the short mid-wicket region. It's a maiden over to start off for Venkat. 7 overs done. WALAJABAD Cricket Club are 59 for 3. बहुत ही अच्छा मेडन ओवर, पिछला ओवर वेंकट का पूरा ऑन द मनी, स्टम्प टू स्टम्प ऑन द मनी. उनको कोई जाके पूछे कि वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लीजेंड ग्लेन मैकग्राथ का फैन तो नहीं है, कि वही एक बॉलर थे जो बिल्कुल ऑन द मनी बॉलिंग करे. सही गेंदबाजी यहाँ पे मणिकंदन जी के द्वारा. पहली गेंद दूसरी ओवर का बिल्कुल यॉर्कर लाइन पे उसको खोद के मारा एल के बी शरावनन ने. और ये बिल्कुल चाहेंगे कि थोड़ा सा रन में गतिविधि जरूर हो, क्योंकि पिछले ओवर में बिल्कुल 6 के 6 डॉट्स हो चुके थे. हाँ, वेट किया उस गेंद को आने के लिए. हाँ, इनसाइड एज हो सकता था, बच गए. लेकिन कितना बड़ा गैप देखिए, बैट एंड पैड के बीच में कितना बड़ा गैप. वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं Sir, ड्राइव let का, them ask लेकिन and जो pick. शॉट उन्होंने दर्शाया था वो तो ठीक इनसाइड एज होने वाला है. ये जो ड्राइव आपने दिखाया वैसे तो आपने खेला नहीं था. तो मणिकंदन जी के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर है. ऐसे फिर से दौड़ के आ रहे हैं. बहुत शॉर्ट डिलीवरी, बहुत रूम बनाया था, उसको गैप में खेला था, लेकिन वहां पे एक फील्डर मौजूद, क्योंकि पावर प्ले भी हो चुका है खत्म. ऑफ फील्ड थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगी, 1 रन मिलेगा एल के बी सरवनन को. अपने निजी स्कोर 14 पे चले जाएंगे 14 बॉल के बाद, और राहुल जी पहुंच जाएंगे 4 नाबाद 8 गेंदों में, और स्कोर का इजाफा हो जाएगा 7-3. विकेट के नुकसान पे शॉर्ट डिलीवरी थी, पेपर पे जाके मारने की कोशिश थी, लेकिन बैट के बिल्कुल हल्का सा आखिरी एंड पे लगा. तो थोड़ा सा मिसफील भी हो चुका था वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर पे, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को. सरवनन फिर से है स्ट्राइक पे. स्कोर 61, 3 विकेट के नुकसान पे. 5वां गेंद 8वीं ओवर का. उठा के मारा है, और ये फील्डर मौजूद तो है, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं जाएगी. 2 बाउंसेस उनके हाथ में. ये देखिए, लेकिन ये खड़े खड़े थे जब ये शॉट मारा था ना, वो थोड़ा खड़े खड़े मार रहे थे. आप देखोगे वो शायद प्रैक्टिस भी जब कर रहे थे, वो लॉन्ग हैंडल जरूर यूज कर रहे हैं. थोड़ा सा पावर बहुत था उसमें, लेकिन 1 रन मिलेगा. आखिरी गेंद 8वीं ओवर का मणिकंदन जी से फिर से ये रिपीट शॉट था जो वो लास्ट टू लास्ट बॉल में मारना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन का हिस्सा हुआ स्कोर में 8 ओवर के बाद. वाला जाबाद क्रिकेट क्लब 63, 3 विकेट के नुकसान पे.
வெங்கட் தான் நல்லா இருக்கு அப்படியே போடுங்க. நான் அடிக்கல ஸ்டெப் தாடி. இல்ல அவன் எப்படி வரான்னு தெரியல. இந்த பேர் இல்ல என்ன वेंकट दौड़ के फिर से आएंगे बॉलिंग करने के लिए। नॉट आउट आउटसाइड ऑप्शन स्लैश करने की कोशिश, फिर से रूम बनाया, थोड़ा सा जगह बना के अपने आप को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं। देखिए पहले भी सर्वानंद जब वो पेसर इन प्लेस थे वेंकट, तो भी बहुत ज्यादा अपना बैट एंड पैट के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है उनका, तो ये थोड़ा सा उनको संभाल के खेलनी पड़ेगी कि बैलेंस में ऊंचाई है। देखिए जगह बनाई, रूम बनाई, मिड विकेट की दिशा में ये गेंद जा रही है, जंगल में चली जाएगी। फील्डर ये सिर्फ एक बंदा वहां पे खड़े हैं, मैच का लुफ्त उठा रहे थे, उन्हीं को जाके शायद लाना पड़ेगा। एम्पायर चेक कर रहे हैं कि ये 6 है कि 4 है। हाँ जी, 6 रन मिलेंगे। हैंडसम प्रहार और छक्का उनके प्लेट से आता हुआ ये सरवनन का, और वो पहुंच जाएंगे 21-17 गेंदों में, और स्कोर का इजाफा होते हुए 70 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से उनका लास्ट ओवर मेड इन ओवर गया था, लेकिन ओवर में उन्होंने 7 रन दे दिए अभी भी, तो डॉट फिर 1 रन, फिर डॉट, फिर एक ह्यूज 6 आता हुआ ये, तो फिर अच्छा प्रहार था वैसे सरवनन की तरफ काउ कॉर्नर की दिशा में। आखिरी गेंद ओवर का स्टॉप डिलीवरी, इस बार फिर से वही शॉट रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे सरवनन। कोई चूक नहीं, कोई शॉट नहीं, कुछ लगा नहीं, डॉट बॉल रहेगा 9 ओवर के बाद। वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 70 विकेट के नुकसान पे। सॉरी लेफ्ट हैंड राउंड லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓவர் காது கேட்க மாட்டேன் நீங்க ஓவர் அரவுண்ட் பேட் சேஞ்ச் இன் bowling bowler coming left arm round to you राकेश RSCA को गेंद दिया गया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। पहली गेंद उठा के मारने की फिर से कोशिश। आई एम नॉट सरप्राइज कि ये बार बार वही शॉट्स दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल आर। 13 गेंदों में फिर से बैकफुट पे जाके इस बार कनेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर है। 1 रन मिलेंगे डी के दिशा में, और वालाजाबाद क्रिकेट क्लब पहुंच गए हैं 71 है 3 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग काफी अच्छी अभी बन रही है यहाँ पे। अगर इसी को थोड़ा सा वो लोग मेंटेन करके चले तो रन्स काफी अच्छे हो सकते हैं। इस बार काफी स्पिन थी और थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी भी अच्छा था।
मिडल एंड ऑफ के दिशा में थोड़ा सा और आगे उनको अगर खिला सकते हैं तो मिस टाइम करके विकेट लेने की चांसेस है यहाँ पे। राकेश ऐसी आगे बेहतर बॉल, रॉटन बॉल की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। यही बॉल की मैं बात कर रहा था कि उनको स्क्वायर अप कीजिए और वही उन्होंने किया। और बहुत बहुत देर तक ऊपर थी वहां पे, अगर एक्स्ट्रा कवर होता ना तो ये लपक लेते, अब तक वो सेलिब्रेट कर रहे होते। 5 गेंद 10वीं ओवर का राकेश आरएसील सरवनन का उस पर ऊपर खिलाया उनको और तेजी से एक सिंगल खत्म करेंगे और सरवनन दे देंगे स्ट्राइकर राहुल आर को और पहुंच जाएंगे। One more. போது பிரச்சனை இல்ல. आखिरी बॉल 10 ओवर का। बहुत तेजी से रूम बनाया है और ये कैच हवा में थी गेंद और ये बहुत ही अच्छी कैच उनके लाइन में, ट्रेजेक्टरी ऑफ द लाइन के साथ उन्होंने ये कैच पकड़ा, बहुत जोर से गई थी तो ये कैच इसलिए ये कैच बहुत ही अच्छा है। 10 ओवर के बाद वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 71 4 विकेट के नुकसान पे बाद और राकेश आरएसीए को उनको मिल जाएगा अपना पहला विकेट आखिरी बॉल पहले ओवर में। கையில இருக்கு. Venkat is on none for 10 for him. Again, those cuts that they have been trying to do over and over again.
has not been yielding them too many runs until unless their ball has been little slowly being bowled. And that's what they really need to keep on doing, Venkat. And should bring up the equation touch little shorter. There we go, waiting for that ball to come, and that ball has been glided behind that point in gully. The ball has got definitely very, very slow, thanks to that some fingers. I'm sure it has touched the ball, and that's why it has gone little slow. One more ball remaining in the 11th over for WALAJABAD Cricket Club. They are on to 75 after the loss of 4 wickets. Last ball of the 11th over. Good ball, very good ball. Hint of away movement. And with the front foot defense, he drives it to its point and will collect a run. 11 overs done and dusted. WALAJABAD Cricket Club are 76 for 4 versus SS Brothers. கேப் கீப்பர் ரோல் பண்ண வேணா. You can see how long and hard that shot was being hit, as it got clubbed away for a majestic 6 runs of the bowling of Rakesh SC. This time it is quicker, the dreaded finger goes up, and Venkat will celebrate. Sorry, it's Rakesh SC will celebrate the first wicket to his name in his second over, and Tenu has to take the long walk back to the pavilion after scoring 8 of 5 balls. And WALAJABAD will be now 5th wicket down at 82 for 5. There you can see the spun. He was already there at the middle stump. That was as plumb as ever. One of the most easiest decisions that an umpire can make on the cricket field, and that was one of them, getting rocked back plumb in front. Up good went the finger, and half of the side is back in the pavilion for WALAJABAD Cricket Club at 82 runs on the board. Gopi. எவ்வளோ போயிருக்குது? 5 தான் இருக்கும். நீங்கள் 3 எடுத்தீங்களா? 5 அவ்வளோதான். லெஃப்ட் ஆர்ம் அரௌண்ட் 3 more to come. WALAJABAD Cricket Club has just lost a wicket at 82. Rakesh RSC got a breakthrough, almost in a position where he was trying to slip it off, but Risfully will play it, but from the middle stump, so looking a little dangerous. So I don't know whether it's good to play off the very first ball from that position, but nonetheless he'll get a run and will get off the mark of the very first ball. It's Stephen Cree, and now LKB Sharavanan has the strike off the back foot, played
punched it towards the man at cover. Will not get any run. The score remains on 83 for 5 Sir, with that single which ball roll led பண்ணாதீங்க. Stephen Curry to get off the mark of the very first ball. In the last match versus Champions 11, Stephen Curry made a handy knock of around 20-24 odd runs to delay the inevitable for his team and Over. versus Champions 11, but couldn't get much of the momentum, and they had to perish and to lose that contest versus 20 runs. At the moment, they are going along at a healthy run rate, and the projected score being at 142. 12 overs done and dusted. WALAJABAD Cricket Club are now 85 for 5. एट्टी रन पे 5 विकेट चला गया है वालाजाबाद क्रिकेट क्लब का। 7.10 रन के औसत से करंट रन रेट चल रहा है उनका एसएस ब्रदर्स के विरुद्ध। ये मैच आप देख रहे हो रॉकफोर्ट सिटीज प्रीमियर लीग T20 का। ये वेलोर क्रिकेट टर्फ पे खेला जा रहा है हियर इन वेलोर इन तमिलनाडु। कुछ मैच डिले है, कुछ वजह से चल बहुत ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे। अगर कैमरामैन थोड़ा सा बैट्समैन और अंपायर्स के दिशा में दिखा दे अपना कैमरा को टिल्ट करके, तो हम थोड़ा सा जान सकते कि वहां पे क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि पिच पे ज्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतना पता होगा, और हमें पता है कि कल 3 मैचेस होने वाले हैं। राइट ऑन योर स्क्रीन 15th of September 2024, which is tomorrow on a Sunday. 3 matches: Grandiose Cricket Club versus Crazy Cruise at 7:25, then Lords 11 Sandos CA versus Crazy Cruise at 10:45 a.m. and then Grandiose Cricket Club versus Lords 11 Sandos Cricket Academy at 1:45 p.m. in the afternoon. So one more match to be played in the day after this, but we have also a betting to be done in the second innings. So you can say it's 1.5 match of the day remaining of this Saturday on this glorious and a shiny, ever shiny Saturday on this glorious and a historic and a memorable cricket ground of this Vellore surface. There's so many runs being scored since yesterday. 50 overs contest yesterday produced of the Deccan Premier League that produced 460 or 50 overs, and the opposition NSC Hyderabad were plummeled and they're hammered for a whopping 383 margin. They were 77 all out. And today also the first match produced to be a very, very good run fest, and the equation of the run, it was just by 20. Now the second match of the day out of the third, WALAJABAD Cricket Club are now 84 for 5, having won the toss contest and winning and electing to bat first. Little bit of a fumble will just get 1 run on the board. WALAJABAD Cricket Club are now 85 for 5 with that single, and Saravanan is on 26 of 29. Gives the strike to Stephen Green. There's so much of healthy breeze blowing across from where I'm doing my online commentary, but I don't feel there is any breeze. They're at the ground. Very, very short. Little pace off from the delivery from Balu, and it's imperative that you play right from where the ball is being bowled, because then using a long handle becomes a little tough, because he's at the moment he's just trying to curve the ball, exposing all his trumps, not being able to get towards the ball, towards the length of the ball, with less than 8 overs remaining in this innings.
They'd feel that they should go up for some good number of runs with not 100 inside 15 runs. She'll shy away of the 100-run mark, again trying to repeat that stroke. So in number 17 is his post back of his jersey. Stephen Cree still on one, not out of four. It'd be good of him if he takes up a single and give it to LKV Saravanan, who's on 26 of 29. Projected score has come up little less now at 134. And Balwen, again, good ball this time, little bit on the leg side. He limps a little bit back to play that stroke, give himself some room, and play it towards the vacant mid wicket region. The fielder comes running in, and we give the ball back to the bowler. One ball more remaining in the 13th over. I think this is good. This is a good move here from the captain, continuing his spell of Baluen. Last ball of his third over. A little bit onto him again, almost in the same length of the previous ball that he has bowled. A single will be picked up, and he will retain the strike. Is Saravanan. 13 overs done, and WALAJABAD Cricket Club is 87 for 5. क्या शॉट था वो. 6 runs मिलेंगे एंड स्कोर पे गतिविधि हो चुकी है. 93. देखिए कैसे खोल के सीधा मारा था बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के दिशा में. कोई भी मौका नहीं था. ये तो बस वो नजारा आप एंजॉय कीजिए. जो गेंद जा रही थी ना, उसका बस अब नजारा एंजॉय कीजिए कि कहां से कहां तक डिपॉजिट हो चुकी थी. इस बार फिर से फ्लैश कर दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप. फील्डर ने की है बहुत ही अच्छा काम वहां पे. ये 4 रन होने का बिल्कुल मौका था. बहुत जोर से गई थी वो स्वीपर कवर के दिशा में. और ये फील्डिंग Keeper. को प्रशंसनीय है. பாலை उनको आप பாஸ் பண்ணுங்க लोग சார், जाके ரோல் जरूर பண்ணாதீங்க. पिच थपथपाइए, क्योंकि नहीं तो आपके खाते में ना 1+3 4 रन हो चुके होते अभी. राकेश RSCA बहुत ही शॉट था. इस बार स्पिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब अपने लास्ट ओवर उन्होंने किया था स्पिन जरूर मिला था इनको कि ये सरफेस तक ग्रिप करेगी. कल भी मैंने देखा था ये स्पिन जरूर कर दिए लेफ्ट आर्म ரைட் பால். स्पिनर्स के लिए. ये देखिए ये बेहतर है, ये थोड़ा बेहतरीन थी, लेकिन ले आओ. मैंने सोचा था ये 28 से गई है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड करार दिया गया है, तो एक अतिरिक्त रन आएंगे यहाँ पे. 8 रन 3 गेंदों में. राकेश RSCA का तीसरा ओवर. ये बहुत ही शॉर्ट और ये बोल्ड भी हो चुके हैं. ठीक इनसाइड एज शायद लगा होगा. कैमरा के इस एंगल से ज्यादा भाप नहीं पा रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर थे स्टंप्स के 6 डाउन. पीछे, लेकिन छठा विकेट का हो गया है पतन. वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 96 6 विकेट के नुकसान पे, और राकेश RSCA को मिल जाएगा उनका तीसरा विकेट. 3 विकेट 18 रन देके राकेश RSCA अब तो थोड़ा सा अपना मजबूती दिखाते हुए अपने बॉलिंग फिगर्स में. ये देखिए कैसे थोड़ा सा क्विकर डिलीवरी, बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं थी, और जब तक वो बैकफुट पे आ चुके होते थे वो गेंद तेजी से अंदर आते हुए टिम्बर को डिस्टर्ब किया. वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 96 6 विकेट के नुकसान पे.
96 6 विकेट के नुकसान पे। हाँ, गुड बॉल, पूरा लाइट वहां पे ही, बिल्कुल जहां पे तप्पा होनी चाहिए वहां पे कड़ी पावी को, लेकिन पावी भी अलर्ट थे और फिर जाके उनको दिशा दी कवर के तरफ। एक रन मिलेगा और पहले ही गेंद पे हो जाएंगे ऑफ द मार्क एंड ऑफ द स्ट्राइक ऑल्सो। आखिरी गेंद 14वीं ओवर का, राकेश आरएसी ने ले लिए 3 विकेट। हाँ, डाउन द लेग साइड जाएगा ये, शायद बैट पे लग के गई है पीछे और लेग बाय का शायद होगा इशारा, अभी भी बॉल डेड हुई नहीं है। हाँ, ये जी लेग बाय का इशारा और उसके साथ ही ओवर हो गया खत्म। 14 ओवर के बाद वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 97 6 विकेट के नुकसान पे। Bala. Bawa apa? Ninety-eight for 6 is Walajabad Cricket Club. Deflected angle of the bat towards the back of the wicketkeeper of his left. Will give a single immediately, and the score will slowly move on to 99 for 6. The moment, the fact that I'm saying it slowly because they have lost a couple of wickets in the space of some runs, but the Throw equation பண்ணுங்க. from the runs hasn't flowed too much. Projected score still a bit respectful at 140, but it's not very healthy, mind you. I don't know. We haven't seen the batting of as his brothers as yet in this match, so really don't know how much they can match up to this equation. But for Walazabad Cricket Club, they really need to win this contest because in the first match, as I mentioned earlier, they have lost by 20 runs versus Champions 11. Little bit of a delay here, and until the delay is shortened, you can probably just go and grab some coffee or some water. At the moment, 14.1 overs done. Walazabad Cricket Club are 99 for 6. Back after that delay, Balu and good ball. The wicketkeeper did very well to close both his legs and not allowing the ball to sneak past him. So dot to start off from the delay. Balu and none for 35 of 20 balls. So he'd love to probably get a wicket or to his name and restrict the run flow here. Pavi on not out of 2 will ship up to face Baluan. Again, outside off stump again and slashed it very, very well. 2, 3, 4 bounces onto that fielder who's charging in to the deep point from third man. And and it will also bring up the 100 runs on the board for Walazawad Cricket Club as the score is now 1-0-1 for the fall of 6 wickets. So when it shines, and it shines very, very hard. Also,
in Gurgaon here in Haryana, from where I'm doing commentary. It's shining very, very brightly today. And the forecast for tomorrow also looks to be very good. Shot outside off stump. I played it, I'd say, dabbly towards the third man boundary for a single, as the man is there for protection. And the score moves on to 102 for 6. This is a lovely, lovely day to play cricket here on a Saturday. And as I've mentioned, I'm sure the focus looks to be very good for tomorrow, as we have already shown you the lineup of all the three matches, which is going to start right early from 7:25 in the morning. Fifth ball of the 15th over. Push back right on the back for the delivery. Played towards the cover again for a single. So these singles and couples won't mind a bit for, I'm sure, for the bowler. Those occasional boundaries and sixes, those become like a thorn in the One more nut. flesh for them, because when you try and run from a distance and restrict the run flow, those occasional things really does hurt. Last ball of his spell from Paluen and of the Olozoda will be the last ball of the 15th over. On to Pavi. Jacked in very quickly as he bowled him. Has he bowled him, or has the ball gone towards the boundary? Whatever it is, surprise. Look on to Pavi's phone, because he's surprised that the ball has caved in and he's Sorry, hit end change. timber. It's a 7th wicket down, and WALAJABAD Cricket Club are now 103 for 7 as Baluen picks up a wicket off the very last ball of his spell. 4 was done for him. It's 1 for 39 to his name. And WALAJABAD Cricket Club are 103 for 7. That split screen will show you the replay of how that transpired. A good ball, very good ball. It checked in, and he was in no stance. He was not in a position to play that stroke, and it caved in very sharply. Just in number 17, have to go back to the pavilion as Giant is the new batter who will be coming out to give company to Stephen Cree. 103 for 7 after 15 overs for WALAJABAD Cricket Club. So Rakesh RSC has to continue his last over of his spell. He has 3 for 20 to his name. With a single of his second ball of his over, the score will now move on for WALAJABAD Cricket Club to 104 for 7. Flighted delivery on the leg. Or has that ball spun? Has that ball spun? I thought for a moment it has spun behind from his legs and onto the stumps, because that curious look of the wicketkeeper suggested so. But wide also been signaled by the umpire, so 1 run and a wide. But that would have been a very curious kind of a wicket if that had happened very close to that stump while he was playing that stroke. Stephen Cree, as he'll get off the strike and give it to Chan, who has come in the last ball at the fall of that wicket on the 7th one. 107 for 7. Right at delivery. It's so much of bounce as that ball Hola, sir. hits the inside part Two of, more. of the bat and gets depth on the ground. Will come up very quickly. 5th ball of the 16th over. No. Lovely ball. This was a little quicker, and that's why despite trying to gracefully play that stroke, he was not being not. You can feel the tingling. He's trying to rub his thighs because he definitely felt it. Last ball of the 16th over. Rakesh, flighted delivery, very Over. safely played off the contour right back to the bowler. 16 overs done. It's 107 for 7 for WALAJABAD Cricket Club. Venkat.
Venkat. Noted. For Venkat. Venkat உங்களுக்கு last over. वेंकट आए गेन करने के लिए 3 ओवर विकेट नहीं उनके नाम 12 रन दे चुके हैं वो वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 107 विकेट के नुकसान पे 1 रन जरूर मिलेगा और ये आउट हो सकता था। अपील ह्यूज अपील स्क्वायर लेग के दिशा में वो देख रहे हैं और ये जरूर जाएगा अंपायर की तरफ क्योंकि उनको लगता है कि ये विकेट शायद आ जाएगा। अभी उनके नाम एस क्रिकेट एस ब्रदर्स क्या ये ग्लव्स लगी है क्या ये गेंद लगी है बहुत जल्दी अभी हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो भी है उनको जरूर लगता होगा कि ये शायद विकेट होगा लेकिन ये रिप्ले अभी हमें जरूर हेल्प करेगी क्योंकि टीवी अंपायर के पास ये निर्णय बनने के लिए चला गया है। 107 विकेट के नुकसान पे वालाजाबाद क्रिकेट क्लब। अभी देखिए गेंद बिल्कुल पीछे विकेट के पीछे बॉल आई हाँ ये क्या ये तो भैया जान आप जा चुके हो ये जी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप हो चुके हो OUT ये देखिए हाँ जी जब लग गई थी ना और बॉल ग्लव्स में ही था तब तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे क्रीज तक तो ही इज ए कॉर्नर और ये 8वां विकेट चला जाएगा अभी वालाजाबाद क्रिकेट क्लब का 107 रन पे बहुत ज्यादा मुश्किल निर्णय नहीं होना चाहिए थर्ड अंपायर के लिए। हाँ सिग्नल आ गया जी सिग्नल आ गया है ऑफिशियल सिग्नल वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 8वां विकेट हो गया उनका पतन 107 8 विकेट के नुकसान पे और 16 ओवर भी हो चुका है। Fielder यार है who throw the ball? Bowler coming right arm over. 5 more to come. एक 107 विकेट के नुकसान पे वेंकट कंटिन्यू करेंगे ये ओवर को पहला ही गेंद पे एक रन आउट के रूप में आ गए तो इसलिए वो विकेट उनके खाते में नहीं जाएगा। शेखर आज आ गए हैं स्टीफन क्री को ज्वाइन करने के लिए और ये विकेट देखिए स्प्लिट स्क्रीन में जब तक वो आया जब तक वो गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में थी और उन्होंने सिर्फ उनको दस्तानों को लगाने की जरूरत थी एंड लॉ के मुताबिक अगर गेंद आपके हाथ में है और लगा दिया तो ये आउट होगा तो उस हिसाब से 8वां विकेट चला गया था। अभी ये लगातार डॉट बॉल्स शेकरी ऑफ द मार्क हो नहीं पा रहे तो सिर्फ 21 गेंदे बाकी है इस इनिंग्स में तो वो चाहेंगे कि जितना हो सके उसके खेलने की जरूरत उनके ऊपर से एक्शन ले लिया था वेंकट ने पहले ही ढप लिया था पहले ही कवर कर लिए थे अपने सर को कि जो भी है अपना सर को तो जरूर बचाना है मुझे। हाँ लेकिन बहुत जोर से मारा थे और शॉट तो शायद कोई कॉटन बॉल का मौका नहीं होता और खड़े ये देखिए बिल्कुल ऊपर से चली गई थी तो लेकिन 1 रन मिलेगा उनको। वालाजाबाद क्रिकेट क्लब 108 विकेट के नुकसान पे
ऑफ द मार्क हो चुके थे। आखिरी गेंद 17 ओवर का ओवर द टॉप खेले हुए हैं, कोई फील्डर मौजूद एक थे, वो बिल्कुल बन गए हैं Fielder. दर्शक, बॉल जाके बिल्कुल सीमा रेखे के अंदर पहुंचाएगी 6 रन के लिए। ये देखिए दोनों हाथ अंपायर के ऊपर, वो सरेंडर वाले पोजीशन होता है, जो Over. जो सरेंडर करते हैं ना, वैसे when an umpire surrenders then you should know that it's a handsome half a dozen 6 runs. uh, Scenario is something, it will be very, very hilarious for him when he sees the replay. But at the moment, it's some very good runs which have been floundered to the bat of WALAJABAD Cricket Club, as they are now 114 for 8 after the finishing of 17 overs. One 4 for 8 for WALAJABAD Cricket Club. Wanting to slice that ball off the very first ball without any foot movement. How can you do that? Off the bowling of Manikandanji. There's a biscuit by the name of Barley G. So you're not allowed to use brand names. So apologies for that. Off the back foot, rocks on and climbs onto that ball. Where has that ball gone? Probably it has gone towards that long on fence for a Ball huge எடுங்க. maximum. Yes, both the hands of the umpire and goes in that surrendering position. So 2 6s in back-to-back overs. So that should bring the equation to a healthy position of that score at 1-0 for 8 for WALAJABAD Cricket Club. So runs are flowing up it here from the blade. Again, wanting to use the long handle to play almost like a seamless stroke, was like a helicopter stroke that he was able to, that he actually was trying to do, but misconnects. Ball will go towards the gloves of the wicket keeper. It's a dot delivery. Fourth ball of the 18th over, very, very short, wanting to rock Sir, and enough play start that பண்ண stroke போக towards the வேணாம். mid-wicket region. Doesn't connect. Back-to-back dots here. You'll be frustrated, I'm sure. Sekari will be saying that how on earth did I miss it? It was so short. But Bani Kandanji, he is leaving a bit dangerously. Try and put up a slow delivery. Try and put up an Yorker, but the short deliveries might just give him some room. There you go. This was way better, but it has gone actually way beyond him because it has got some uneven bounce after that ball hit the toe end of the bat. It'll go behind the bowler, will get a run. Because one ball is still remaining in the 18th over, and Stephen Green now has the strike. He's on 12 or 15. Outside off stump, very, very slowly curves the bat towards that point region for no run. Over. 18 overs done, dusted. The score for WALAJABAD Cricket Club is 121 for 8 on the board. Okay. ஸ்கோர் மாத்திரம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. The penultimate over starts, and it's Sarani Raj A who has the ball in his hand. Ample of room to curve that stroke by Sekar E. And will get a run.